Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So one of the subscribers had asked me what is the fate of result of Jammu and Kashmir Bank clerk and officer exam. In fact, no information is available on this score. But my own experience says this result may not be declared soon because most branches of Jammu and Kashmir Bank are almost non-functional. Very few staff members are reporting on duty in Valley. So till some normalcy comes, Jammu and Kashmir Bank may not be focusing on recruitment or upgrading the staff in the branches. That is my view. No official communication is available on this. So my advice to the candidates, those who have appeared for Jammu and Kashmir exams and awaiting result, they should focus on other exams. Let it come when it comes, because it is very difficult to ascertain from any scores what is the fate of that result. One of the subscribers said, sir, government departments, they are releasing the result. Why not Jammu Kashmir Bank? The banks are different than government. Government can do proactive steps for their own departments. As far as bank is concerned, the recruitment solely dependent on the business opportunities. So if there is some lockdown in some area and business is not happening, that means they don't require the staff at present. But the moment normalcy comes, the business may grow and then staff requirements may happen. Jammu Kashmir Bank is mainly concentrated in Jammu and Kashmir areas. Their presence outside that area is very limited. So that is my thoughts. Rest, anything can happen. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. एक सब्सक्राइबर ने पूछा, सर जम्मू कश्मीर बैंक का क्लर्क ऑफिसर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, उसके बारे में क्या जानकारी है? ऑफिशियल कोई जानकारी इस एरिया में नहीं है, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मुझे नहीं लगता ये जल्दी रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो वैली के अंदर ब्रांचेज हैं या जो बिजनेस है वो अभी नॉर्मलसी पे नहीं आया है, तो रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी बैंक की. जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो जल्दबाजी नहीं करेंगे रिक्रूटमेंट की. रिक्रूटमेंट या ये प्रोसेस बैंक के अंदर उस समय होता है जब बैंक कोई ग्रोथ अपने सामने देख रहा होता है या बिजनेस ग्रो कर रहा होता है. ओवरऑल भी बैंकिंग सेक्टर में अभी बिजनेस की कोई अच्छी ग्रोथ नहीं है. तो सिर्फ हम लोग अगर वेट कर रहे हैं इस रिजल्ट की, हमें नहीं करना चाहिए. जब भी ये आएगा आ जाएगा. बाकी बैंकों के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए और उस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए. ये मेरा निजी विचार है. ऑल दी बेस्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल.